T20 Plus with Leher. Today we are going to learn hard and soft sounds of letter C. आओ सी की आवाज़ें सीखते दो हैं। किस्म की आवाज़ें देती है। फर्स्ट हार्ड साउंड, दूसरा है कि सॉफ्ट साउंड। We can make hard and soft sounds of C in the classrooms. In this way, students very easily can understand what is the soft sound of letter C and what is hard sound of letter C. हम खेल खेल में बच्चों को सी की हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। अगर स्टूडेंट्स क्लासरूम्स में सी की हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप उन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल से सी की हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स का मुताला करने को कहिए और इस तरह वो कई नए वर्ड जो सी साउंड की हार्ड और सॉफ्ट साउंड्स वाले होंगे वो ढूंढ कर ला सकते हैं। इस तरह उनके लिए सी की हार्ड और सॉफ्ट साउंड्स को समझना इंतहाई सब्सक्राइब करें और लाइक अमल हो जाएगा। Students must visit libraries and in this way they can find out the hard and soft sounds of letter C themselves. स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाएं और हार्ड और सॉफ्ट साउंड्स को खुद ही तलाश करके लाएं एंड दे शो दीज लेटर्स इनटू द क्लासरूम्स और फिर वो इन अल्फाज को इन लेटर्स को क्लासरूम्स के अंदर बताएं और सबको दिखाएं। राइस राइस काउंट कट केयर। आवाज़ों की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि बच्चों के जहन नशीन हो जाएं। Make practice of these sounds again and again so that they can be permanent in the minds of students. आवाज़ों की प्रैक्टिस के लिए हम कलरफुल कार्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो बच्चों के लिए इंतहाई दीदा ज़ेब और दिलचस्प होता है।